With this, I, Manvi Saraswat, welcomes you all in this auspicious evening where we are completing our 119th Now I'll talk graduate about the scholarship. IORA region. IORA region है क्या basically? Section now I'll come to the second section that will be the what is blue ocean economy. Population है world का 36.40% of the global population is living go around through it. the Indian Ocean island countries, which not only includes Madagascar, Mauritius, or Seychelles that you've been discussing. Also, Comoros and Reunion becomes very talking about the green economy. That was very important, and starting with poor development in rich countries, which is a very good concept. And I would like it was a very good presentation, comprehensive, nice. So it was enlightening for all of us, I think. I am Parma Khannawali, I am field research scholar from University of Delhi, Department of African Studies. Today for my topic and for this talk, my topic will be the blue ocean economy in IORA, opportunities and challenges. I'll cover up this topic in few subheadings or few subsections we can say. The first section will be about the introduction part. The second section will be about that blue ocean economy. What is blue ocean economy? Second section will be the third section will be the Indian Ocean region. Fourth section will be the opportunities in blue ocean economy. Fifth section will be the challenges in blue ocean economy activity. And the second last topic will be the maritime security. And why maritime security is essential for the blue ocean economy in India and as well as in the IORA region. And the last part will be the cover up with the conclusion. So when I say that the introduction part, so as we know that ocean water covers 72% of our planet's surface when and water is not only for the human survival but also for the modern activities, modern economic activities we can say, by connecting countries, vendors and customers all over the world. And oceans are becoming more important in facilitating the international trade in the present time. It is not only uncommon. It is for items like transported by the seas between the two or more countries. It is the activity which is happening since the ancient time. Whether it was a Silk route or whether it was some other Chinese routes or Indian routes, it was happening since ancient time. So it's not a new concept, but it just a word came with the new one, the blue. For the thousands of years, the oceans have been like revered as a reliable mode of transportation and a plentiful food resources. Oceans provide a substantial portion of the global population with food and livelihood, as well as in the transportations and means of transportation. And it covers 80% of the global trade, which is a huge number for now. The third largest oceanic region is the Indian Ocean region, basically IOR, is the home of population of about like 36.40%, which in numbers is like 2,538.41 million people around the world. During the 2008 global recession, the international political economy has undergone a significant changes, or we can say the shift in dynamics, and defined in the part of geopolitical, strategic and instability, which is decreasing. And during that period, the price of commodity were decreasing, and the poor development in the rich countries, especially like the countries like Western countries, or we can say even the Chinese companies or countries. China as a country was getting affected a lot because the 2008 economic financial crisis was something which was a kind of shock for the international markets. And the second section, now I'll come to the second section, that will be the what is blue ocean economy. uh, अगर हम बहुत ही आम भाषा में बोलें तो लोग इसको कहते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था. नीली क्या है? Basically, नीला or the blue is referring to the word of ocean, rivers, lakes, seas. It concludes every resource or every place which is covered with the water. Either it's ocean, either it's sea, either it's a river, either it's a lake. All has some kind of minerals or some kind of resources which we use for the economic purpose, which we use for the trading, which we use for transportation. So in very general term when we say, so the blue economy talks about the ocean economy. जब हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ओशन से रिलेटेड. So during the 2012, the first time when we heard this term at international arena, blue economy, it was coined for first time, and there was an author named Gunter Pauli. He had written a book, 10 Years, 100 Innovations and Thousands of Jobs. In that he talked about it, the first time, the blue economy. And this book came in 2010. And 2012 during the Rio summit, they talked about it, blue economy in terms of the world arena.
Second thing, when we say the different definitions. So in a very general definition, when we say the blue word is referring to the vast lakes, rivers, extensive oceans, and resource bases. This blue word is more than just an economic space. It is a part of like Africa and as well as India's rich mineral resources. Not only the mineral resources, but even the geographically very rich. Second thing, socially also it is very rich because we have seen a lot of the cultures and the shows, society is based on the river areas. So this area is one of the important area in context of the Indian time or Indian context we can say. Second thing, when I comes to the kind of professional definition for these this term. So World Bank denotes that the sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs, while preserving the health of the ocean of ecosystem. तो ये बात करते हैं कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, वर्ल्ड बैंक बात करता है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हम ओशंस के साथ ओशन से रिसोर्सेज को यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एज वेल एज अपनी लाइवलीहुड और जॉब्स को बढ़ाने के लिए. बट वो एक चीज पे और ध्यान देते हैं कि हमें इसको प्रिजर्व करते हुए भी चलना है. ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते जाना है और उसको बस खत्म ही कर देना है, ऐसा नहीं है. दे डू टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि इट शुड बी वेरी वेरी we should preserve it, we should keep it healthy. When I say the second definition, when I jump to second definition, that is by the EU, that is European Union. तो यूरोपियन यूनियन जो बात करता है all economic activities related to ocean, seas and coast. But here is one thing which you have to keep in mind, that is कि ये कभी भी कंजर्वेशन और ओशन कंजर्वेशन को सेपरेटली बात नहीं करता है. मतलब ये सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करने की बात करता है, लेकिन उसको कंजर्व करना है कि नहीं करना है इसके बारे में फोकस नहीं करता है, इसके बारे में बात नहीं करता है. थर्ड एक प्रोफेशनल डेफिनेशन आते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के थ्रू, जहाँ पे वो बात करते हैं एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट विच इनकाउंटर बेटर स्टूवर्डशिप ऑफ ओशन. तो एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र, इकोनॉमिक क्षेत्र या एरिया जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ओशन और रिसोर्सेज से अवेलेबल, ब्लू रिसोर्सेज जिसको वो कहते हैं. अगर हम ब्लू ओशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स वेरी इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, it is a very long term economic development concept for the coastal areas through the implementation of sustainable practices. जब भी हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की विच इज SDG, तो उसमें भी ब्लू ओशन इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है. उसमें भी बात की गई है कि वी हैव टू सस्टेन द ओशंस, वी हैव टू कंजर्व द ओशन, वी हैव टू लाइक शुड नॉट डू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर द रिसोर्सेज. सेकेंड थिंग, इसी चीज के अंदर में बात आती है कि ब्लू ओशन इकोनॉमी ह्यूमैनिटी को भी ड्राइव करता है फ्रॉम सीज टू कोस्टल रीजन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इकोनॉमिक पे ही फोकस करना है, दे आल्सो फोकस ऑन द ह्यूमैनिटी कॉन्सेप्ट दैट ओके वी शुड डेवलप द पीपल अराउंड द कोस्टल एरियाज आल्सो. अब यहाँ डेवलपमेंट की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि वो लोग डेवलप नहीं है या अंडर डेवलप्ड है, दे आर डेवलप्ड, बट दे टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज व्हिच शुड कंजर्व द ओशंस. So we have to keep in mind that whenever we are talking about the blue ocean economy, we do focus on the conservation of oceans at the same time. So as I told you earlier, as I shared earlier, this term has been concept or the coined during the 2012 Rio Summit, and it was interestingly coined by the small island developing states, which also calls as SIDS states. So they talk about कि this area, blue ocean economy is also about our present, it's also about our future. So this is the new areas to join for the future aspect as well as the present aspect. And it directly linked with it कि if we are conserving today, we are going to get the result tomorrow. So this is the second thing in this whole definitions. Now I'll talk about the IORA region. IORA region है क्या basically? तो बेसिक जब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, जो कि हमारा इंडिया शेयर करता है और काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज, श्रीलंका, मालदीव्स और एशियन कंट्रीज भी शेयर करती हैं, इस पूरे रीजन को हम IORA कहते हैं.
as an introduction, I had shared about this. It's basic data, like कितना population है world का, 36.40% of the global population is living around it, and third largest region है ये maritime का. इसके अलावा यहाँ पे और क्या activities हो रही हैं? So here are the fisheries, aquaculture, tourism, shipping, ports, natural gas extraction. These all are the economic sectors which are linked to this area. Third, in this, the health and resources of the Indian Ocean are very very vital for the region's economy. अब ये सिर्फ इंडिया इकोनॉमी की ही बात नहीं कर रहा है, ये सब उन कंट्रीज की इकोनॉमी की बात कर रहा है जो इस एरिया के आसपास में है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे मेडागास्कर हो, चाहे मॉरिशस हो, या फिर ये इंडिया के बारे में हो. ये सारे ही उन कंट्रीज को इंक्लूड करता है जो इंडियन ओशन रीजन में एग्जिस्ट करती हैं. इसके बाद एक और चीज इसमें और कही गई थी कि जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन कुछ रीजन से हो रहा है, जैसे मेरीन पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, ओशन एसिडिफिकेशन है. ये कहता है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें वेल्थ को भी बनाए रखना है और हेल्थ को भी बनाए रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन ओशन रीजन. There is one more point about in this sector. There are few more countries which are playing a very vital role. When I say the very vital role, so basically it comes to the African and Asian countries. In Africa, South Africa, Madagascar, Seychelles, Mauritius, Djibouti, these are the countries which are coming in this sector. From Asia, India, China, these are the countries who are playing a very vital role in it. Very interestingly, USA is also showing its interest. Although China और USA का एक ही concept है कि we have to acquire the land for the army bases or for the capturing the land in the form of neo-colonialism. So वो लोग वो चीज पे ही फोकस कर रहे हैं. But yes, इंडिया एंड अफ्रीका इस एरिया को बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं. सेकेंड चीज आती है कि इंडिया के ब्लू ओशन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं यहाँ पे. पहली चीज तो ये आती है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है. समथिंग अबाउट द 7,517 किलोमीटर जो इसका है वो कोस्ट लाइन है, और यही रीजन है कि ये इसको बहुत ज्यादा रिलेवेंट बना देता है. सेकेंड चीज उसके बाद आता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्लू ओशन इकोनॉमी क्या क्या बात करता है. तो इसमें आती है नीति आयोग की. सबसे पहले नीति आयोग इस पे बारे में क्या बात करता है. द इंटायर सिस्टम ऑफ ओशन and ocean resources and man-made economics infrastructure in maritime own shores, coastal zones within the India's legal jurisdiction, which aid in the production of goods and services. नीति आयोग के मानना है कि ये एरिया पूरा वो एरिया जिसमें नेचुरल जो ओशन रिसोर्सेज हैं वो, उसके साथ साथ जो मैन मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यार्ड्स, शिप यार्ड्स बनाना या पोर्ट्स बनाना, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स बनाना, ये सब जो इसके लीगल जुडिक्शन में आती है उसको वो ब्लू ओशन इकोनॉमिक एरिया काउंटर करते हैं नीति आयोग के अकॉर्डिंग. नीलंजन घोष एंड श्रीनाथ श्रीधरन है, ये दो रिसर्चर्स हैं जो ORF के लिए काम करते हैं इस वक्त. दे रोट इन देयर आर्टिकल बेसिकली कि जो ब्लू ओशन इकोनॉमी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रेफर करते हैं तो इंडिया के लिए ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है. यूनिक अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि इस एरिया में अभी तक काम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम हुआ है. एंड दे ऑल्सो फोकसेस ऑन दैट कि जो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है यहाँ पे वो हमें ग्रीन इकोनॉमी और सोशल इक्विटी के कॉन्सेप्ट में करनी है. नाउ व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी इट्स नॉट रेफरिंग टू द एग्रीकल्चर, दे आर नॉट रेफरिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दे आर रेफरिंग टू द healthy and wealthy economic session. They are referring to the healthy and wealthy area of blue ocean economy. कि ब्लू ओशन इकोनॉमी हो हमारे साथ, हम उसमें काम करें बट उसको हेल्थी रख के, उसको ग्रीनरी रख के, उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है उसका. ये दो थिंकर्स, ये दोनों रिसर्चर्स इस बात पे फोकस करते हैं. इसके बाद अगर हम इंडिया की ब्लू ओशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इंडिया की ओशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मल्टी फेस्ड है. मतलब इसमें काफी सारी चीजों को ऊपर वो ध्यान देते हैं. ऑल्दो अभी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 4% ऑफ जीडीपी हमारा इसमें से आता है ब्लू ओशन इकोनॉमी के एरिया से, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसको और ज्यादा हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन द अदर कंट्रीज वर फेसिंग और डीलिंग विद अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऑल्दो वी हैड डेल्ट विद टू,
but still India had emerged very well in this sector. During the COVID period, financial year, this one, the April 2021 to February 2022, 7.2 billion dollar trade was there. Like, it was recorded one. It was a brilliant numbers basically. Now I'll come on the opportunities or the sectors of blue ocean economy, which will talks about the पहला fisheries and aquaculture. तो इंडिया की जो कोस्टल इकोनॉमी है वो समथिंग अबाउट द 4 मिलियन फिशरमैन हमारे इस पूरे रीजन में रहते हैं या बेसिकली सस्टेन करते हैं. सेकेंड चीज, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, which is the highest number I would say. And third is something about 2,50,000 fishing boats are there in India. 9 of the Indian states have access for the coastal line. तो ये जो नंबर हैं, ये जो डेटा हैं, these are the proof that why this sector is so good for the Indian economy in the future aspect. Second thing, the fishing and the ports. So Indian borders are being used for the ports or shipyards or shipping since the ancient times. चाहे हम बात कर लें वास्को डी गामा में जब सी रूट ढूंढा या उससे पहले जब हम ट्रेड वगैरह करते थे, तो ये सारा जो एरिया है ये पहले का ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, बस इसको नया टर्म दिया गया है इन द मॉडर्न टाइम. As the time changes, we changes the terminologies. तो ये terminologies नहीं आई हैं अभी. इसमें 200 पोर्ट्स इंडिया के पास हैं इस वक्त, जिसमें से कि जो 12 पोर्ट्स हैं, those are dealing with something about 541.76 million tons of trade, or we can say the transportation of goods and services in the financial year of 2021. So you can see the numbers are really high. Now, second thing, the highest was the port which are working very well. That is in the Goa, located in the Goa. That is Mormugai port of the Goa. That is handling something about the 62.6% of the total traffic of this whole coastal line. Third point, which comes shipping and shipbuilding. This area is also important when we say the India's blue economy concept. Right now, we are planning, or the government is planning to achieve something about the 33% by 2035. They are planning, shipping potential to increase by 33%. Currently, there is 6% presently. Now, the second thing, oil and gases. Why oil and gases are important for the Indian Ocean? Although Indian Ocean में oil and gases के ऊपर अभी इतना काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल जितना अरब वगैरह, जितना अरब कंट्रीज में उनके कंपैरिजन में बहुत कम है. बट फिर भी इंडियन ओशन के पास ये कैपेबिलिटी एंड ये एबिलिटीज हैं कि दे कैन एक्सट्रैक्ट द ऑयल एंड गैसेस. एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन कि जिससे कंजर्व करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए. ऐसे नहीं कि बस एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसको फिल अप ना किया जाए. सो दे आर ट्राइंग ऑन दिस. Last point will be the digital connectivity in this sector. Why digital connectivity is important? So digital connectivity is not only important for one country, but it also connected because we have to communicate with the other countries also. It also increase the regional cooperation. तो इस reason से जब हम देखते हैं तो digital telecommunicating is very important. In this sector of opportunities, when I say few more sectors, that is marine tourism. Marine tourism, it is one of the interesting side. A lot of the tourism or the tourists are getting attracted towards the Indian beaches or Indian oceans areas, island areas. Second, seabed mining. Now what is the seabed mining? अब seabed mining है, this is basically an environmental science term. जब हम ओशन लेयर्स के नीचे, सबसे नीचे लेयर्स पे जाके माइनिंग करते हैं नेचुरल मिनरल्स की, गैसेस की, है किसी भी और ऐसे नेचुरल रिसोर्स की, तो हम बात करते हैं सीबेड माइनिंग की. सीबेड माइनिंग जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है. इट इज वेरी डेंजरस व्हेन if we are not looking at this sector properly, then it is one of the becoming a very major challenge for many of the countries in the world.
Now I'll talk about it. What are the challenges that the Indian Ocean region has right now in the context of the blue ocean economy? तो पहला चैलेंज जो आता है दैट इज द थ्रेट ऑफ सी बॉर्न टेरर. सी बॉर्न टेरर में पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, illegal exploitation of natural resources, terrorism, मेथड ऑफ ट्रेड. illicit method of trade में एक एग्जांपल है बोको हराम का, विच इज अ नाइजीरियन टेररिस्ट ग्रुप, बेसिकली रेडिकल ग्रुप. What the Boko Haram group do right now, and what they are doing since past many years, they extract the oil from the Nigerian lands and landfills, basically the areas, and what they do, they sell this crude oil to the US in the black, illegal method से. उससे इनको क्या नुकसान हो रहा है, उससे उस कंट्री को क्या नुकसान हो रहा है कि नाइजीरिया डेवलप मतलब रिसोर्सेज होने के बावजूद वो एक अभी भी फेज में है कि वो अभी भी डेवलप उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड के साथ या जिस तरीके से उसे करना चाहिए था. तो ये एक रीजन है जब हम बात करते हैं थ्रेट ऑफ सी बॉर्न टेरर की. इंडिया के अंदर इस तरह का नहीं है, बट यस, terrorism was there. We could see the example of 2008, Mumbai attack. Terrorists came through the sea route. So this is one aspect. Second thing, the man-made problems. In sea or ocean, what happens in recent years, man-made activities had been drastically increased, which led to a lot of problems. There is a case of Japanese ship named as MV Washiko that struck in the ocean. And what happened when it struck? So there was 4,000 tons of crude oil, and among of them, few crude oil trains or vessels were leaked. And what happened with this? When it leaked, so it created a kind of havoc in the. It created a kind of problem for the ocean diversity, ocean organisms. As well as it also created problem as in context of the pollution in the ocean. So जब इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह के इंसिडेंट्स हमारी रीजन्स में होते हैं या हमारे एरियाज में होते हैं जो रिसोर्सेज इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक तरीके का चैलेंज क्रिएट करता है. और ब्लू ओशन इकोनॉमी में ये चैलेंज बहुत ही फ्रिक्वेंट है. सेकेंड थिंग, इसी के अंदर में जब हम बात करते हैं ट्रैश को पुट व्हेन वी पुट डाउन द ट्रैश इनसाइड द ओशन और द सी बेड्स. We had seen, I had seen experienced it very well when I was traveling through the beaches in Bangalore. So people used to, throw the bottles very openly, and they do this thing even now. तो जब हम ये एक्टिविटीज या इस तरह की हरकतें करते हैं, that also creates a kind of problem, and this is what the man-made problems for the blue ocean economy is. Then there is a natural hazards. Natural hazards में हम बात करते हैं साइक्लोन्स की, सुनामी की, टाइफून्स की, हरिकेन्स की. ये सारे ही जितने भी नेचुरल हजार्ड्स हैं, ये सारे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि दीज आर द ड्रास्टिक थिंग्स. व्हेन दीज अकर्स, it destroyed everything. Then we talks about the climate change. When we say climate change, so there is a temperature, the rise of temperature under the sea, and people think that पानी है तो ठंडा होगा. नहीं, when it comes to the under the sea, the water goes really high, really high. This is the challenges. The last challenge which I will talk about it, that is the marine pollution. As I took the example, जो पहले example मैंने लिया जापानीज शिप का, उसके अलावा भी pollution के parts हैं. इसमें सबसे important क्या आता है कि जब हम अपनी बात करते हैं oceans की, marine pollution में human spread pollution सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं हम उसका कोई भी दूसरा मेथड नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बस एक्टिविटीज करे जा रहे हैं, बट उसके पीछे का रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं. इसमें हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आता है, जैसे केमिकल्स, मेटल्स को हम जब थ्रो आउट करते हैं. इसमें हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट भी आता है, रेजिडेंशियल वेस्ट आता है. रेजिडेंशियल वेस्ट में हमारा सबसे बुरा सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम का. आई डोंट गेट इट व्हाई वी डोंट फाइंड अ काइंड ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस. अभी भी हम देख रहे हैं हमारी रिवर्स क्यों खराब हो रही है, क्योंकि हम अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम को उसके अंदर डाल दे रहे हैं. जब हम यही चीज करे जा रहे हैं तो कहाँ से वो पोल्यूशन इंप्रूव होगा, कहाँ से वो पोल्यूशन ठीक होगा. सेकेंड चीज आती है प्लास्टिक पोल्यूशन, विच इज हाईएस्ट रेंज ऑफ द पोल्यूशन राइट नाउ इन प्रेजेंट डे.
A lot of the Discovery channels, Natural Geographic channels had seen a lot of the time that how the shipyards or the कई सारे क्रूड प्लेसेस होते हैं जो जाके शिप के थ्रू कई सारे लोग उन प्लास्टिक्स को निकालते हैं अंडर द सी बेड से. So this is a kind of problem which we have to resolve it, which we have to think about it. Then it comes to illegal fishing in the southern India. Interestingly, in the southern India, a lot of the fishery mafias are there, fishing mafias are there. जैसे हम सुनते हैं ना कि यूपी बिहार में कि बालू माफिया है या कोई और, वैसे ही इलीगल फिशरी माफिया भी है वहां पे सदर्न इंडिया के पार्ट्स में जहां कोस्टल लाइन एरियाज हैं. So these are the challenges of the blue ocean economy in the India time. Now I'll discuss the concept of maritime security. अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी ब्लू ओशन इकोनॉमी की तरह नया ही कॉन्सेप्ट है. ज्यादा डिटेलिंग में इसके ऊपर डेफिनेशंस भी अभी तक प्रॉपर्ली कोई नहीं बनी है. मैरीटाइम सिक्योरिटी बेसिकली वी सी एज अम्ब्रेला टर्म. अम्ब्रेला टर्म क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर हम नेचुरल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, मरीन एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात करते हैं. और इसके अंदर ओशन भी इंक्लूड है, रीजनल सीज भी इंक्लूड है, टेरिटोरियल वाटर्स भी इंक्लूड है, रिवर्स एंड पोर्ट्स भी इंक्लूड है. तो जो मरीन कॉन्सेप्ट है, मरीन टाइम कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही वाइडर रेंज पे अवेलेबल है. इसके बाद बात करते हैं कि व्हाई मरीन टाइम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द इंडियाज ब्लू इकोनॉमी. And it's not only important for the India's economy, India's blue economy, but it's also important for the all blue ocean economies. पहला चीज है कि पायरेसी के लिए, क्योंकि पायरेसी अभी भी हो रही है वर्ल्ड में, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, सोमालिया, जैसे पायरेसी में हमारा जब नाम आता है तो सोमालिया एकदम से क्लिक करता है अफ्रीकन नेशन पे. तो सोमालिया में अभी भी पायरेसी होती है. दिस हैपेंस वेरी फ्रिक्वेंटली. दूसरी चीज आती है कि सेकेंडली टेररिस्ट अटैक्स. मेनी टाइम टेररिस्ट एंड जो इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए रूट जो यूज करते हैं वो सी रूट है. थर्ड बात आती है एनवायरमेंटल डैमेजेस की. अब एनवायरमेंटल डैमेजेस में हमारा पोल्यूशन भी इंक्लूड होगा, हमारा क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूड होगा. दिस ऑल एरियाज इंक्लूड इन द एनवायरमेंटल डैमेजेस. इसके बाद आती है बात ड्रग एक्सपोर्टेशंस की. मेनी कंट्रीज आर यूजिंग दिस सी रूट फॉर द ड्रग एक्सपोर्टेशंस, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी कम है. दैट इज द रीजन इट इज इजी टू एक्सेस इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. बट व्हेन व्हाट हैपेंस, ड्रग्स आने से सिर्फ उस कंट्री का नहीं होगा, बट इवन इट हैपेंस टू इफेक्ट टू मेनी कंट्रीज. उसके बाद बात आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विच इज द लास्ट पार्ट इन दिस, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मरीन टाइम सिक्योरिटी के अंदर का प्रॉब्लम है. इसके बाद अगर हम इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अबव ओवर ऑफ लाइक 7,000 किलोमीटर से अबव है. तो जब हम इसकी बात करते हैं, इट मींस वी हैव अ वेरी वाइडर एरिया टू गेट सिक्योर. वी हैव टू सिक्योर दिस एरिया. एंड कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे अच्छा होता है जहां पे पीस होता है, जहां सिक्योरिटी होता है. So peace and security has a direct relation with the economic sector, economic development. Second thing, we talked about the securing sea lanes of communication, which we say is SLOCS. This is one of the important sector for the India's economy, India's blue ocean economy in 21st century. Then, very interestingly, the threat of the USA and China, which is the last point for this maritime security. China is becoming a kind of threat for Indian Ocean region. There is a reason for it. Why? Because China has a policy to acquire the lands, to acquire the fields, so that they can set up the military base, they can set up the economic base, they can set up the manufacture base. तो चाइना का अपना बार बार साउथ चाइना सी के ऊपर उसका क्लैशेस होते हैं. सेम चीज उसका आईओरे में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. तो दिस इज द रीजन चाइना इज आल्सो बिकमिंग अ थ्रेट फॉर अस. एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज द कंक्लूजन. इन कंक्लूजन आई वुड कंक्लूड इन अ वे कि ब्लू ओशन इकोनॉमी सिर्फ एक सेक्टर नहीं है. इट इज आल्सो ए सेक्टर, इट इज अ काइंड ऑफ होम फॉर अस. क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी को हम तभी डेवलप रख सकते हैं या तभी प्रोग्रेसिंग रख सकते हैं जब हम अपने एरिया को, अपनी प्लेस को सेफ रखते हैं.
अगर हमारा प्लेस सेफ नहीं है तो वी कांट डेवलप एनीथिंग, वी कांट पुट द थिंग्स इनटू, वी विल पुट अ काइंड ऑफ बैरियर टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर। ये एक बैरियर बन जाएगा। अगर ब्लू ओशन इकोनॉमी को अगर हमें सेफ रखना है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे किसी और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हो, वी हैव टू सी कि जो ओशन है वो नेचुरल देन है भगवान की। तो वी हैव टू रिजर्व these areas, we have to conserve these areas, and that's all what we have to focus in the blue ocean economy. That's all from my side. Okay, at the outset, I would like to thank the organizers, especially Dr. Manish Karamwar, for inviting me to share my views on the very important topic, Blue Ocean Economy, Sea of Opportunities. So before I begin, I would like to congratulate the team of dynamic students who have taken such a great initiative, academic initiative, in fact, in the form of the Graduate Scholars Talk series, which is, I believe it is primarily devoted for the students to stage their scholarly research work. So a big congratulations to the team. Now, getting back to today's presentation by Miss Padma Khannawalia, which was very enlightening, I must say. Keep up the good work, Padma. It was very comprehensive. You've highlighted the important points very clearly. But I would like to highlight a few points related to your presentation. Although a lot has been covered, I'll just go one by one how you have proceeded with your presentation. I like the way you started your presentation by saying how oceans, involves cultural activities, which also plays a significant role in building relationship. That is one aspect that becomes, very significant. Starting with poor development in rich countries, which is a very good concept, and I would like you to elaborate much on that also when you proceed with your work. Then you discussed about the blue ocean economy, where you discussed various definition, which brought out a clear idea about the concept. And then proceeding towards the Indian Ocean region, it's very important to understand the region when we talk about, because I see you've also mixed several countries, and you've also been talking about the African continent. So while talking about the African continent, it's very important to understand the Indian Ocean region. Very important countries that I would like you to highlight, or maybe if you've missed, or maybe you missed to speak upon, try to also just take a view on the, or just try to go through the Indian Ocean island countries, which not only includes Madagascar, Mauritius, or Seychelles that you've been discussing. Also, Comoros and Reunion becomes very important. So it's important to also understand how the Indian Ocean Commission, which was formed, is playing an important role in enhancing India's relationship with the Indian Ocean island countries of Africa, basically. In terms of Indian context, I see you have tried to highlight important points, but one thing which maybe in my concluding part I would try to focus, that you have discussed about the opportunities and challenges, but you should have also, if you can incorporate the challenges, if you're discussing about the challenges, what are the initiatives taken by the government? That can be the last part, if you just want to delve into it. Talking about the green economy, that was very important, and you've beautifully highlighted it, because understanding the concept of green economy in comparison to blue economy, that becomes very important. Challenges were highlighted precisely, and as you mentioned, that not much has been done in the region in terms of oil and gas. So it's not that the government is not taking initiative. A lot is being done, where we see that the country is also getting into bilateral engagement. The country is also getting into trilateral engagement. So if you can just take a look of the initiative that the government has gone through. Also, when you're talking about the threat of seaborne terror, you discussed about Boko Haram, where I was just thinking, when you talk about Al Shabaab, Somalia, and the Horn of Africa, you discussed later on, and the drug trafficking part, I thought you would be discussing in the challenges. So this is regarding the challenges. Threat of US and China, how China is setting up its bases, that also you have to understand, that how China is coming up with its military base or its military exercise. We see recently in the Seychelles, in the Assumption Island, how China is engaging and not trying, and trying. In fact, India was also trying to build its base in the Assumption Island, but how China has been opposing India. That's a very interesting topic. If you can just go through the articles. Also, lastly, just 2 points. Just check the important activities connected to blue economy, because where you can just
discussed the renewable energy, the sustainable marine energy, which plays a vital role in social economic development. Fisheries, you have discussed beautifully. Water transport can be one aspect, because more than 80% of the traded goods are transported by sea, as you have already mentioned that. Tourism could be one aspect again, which can be elaborated upon. Climate change, you have discussed. Waste management, which 80% of the litter in oceans, that you've already discussed, is due to the land-based sources. So better waste management system can help revive deteriorating ocean health. And also, lastly, since I mentioned you've been discussing about challenges of blue economy, unsustainable extraction is also one point that you can add, or physical alteration and destruction of marine and coastal habitats. How deforestation and mining is trying to, you can link it to the physical alterations and destruction, how there has been unplanned and unregulated development. Then also how it is leading to the loss of degradation of critical habitats. So that can be can be another point. Since I'll close my remarks by discussing that it's not that the country is not doing anything. There are a lot of initiatives that has been taken by the Indian government, because if you see, it was in the Ugandan parliament that Prime Minister Modi ji, he talked about the Sagar Mala concept, where he also focused that Africa is a priority, and he clearly gave the Sagar Mala project, which is a vision of how to reduce logistic cost for export, import, and domestic trade with minimal infrastructure investment. All those aspects were taken into consideration. Then the second point, you can also mention about the coastal economic zones, how it aims to promote export by providing infrastructure and facilities to entrepreneurship, or to set up business and industries near ports, considering the challenges and overcoming the challenges which are which exists through rules and regulations. Then there's this Matsya Sampada Yojana also, which is it's a flagship scheme for focused and sustainable development of the fisheries sector in the country, which is working. It brings about the blue revolution by harnessing of fisheries potential in a sustainable, responsible, and inclusive, equitable manner. And lastly, there is another initiative which is if you just go through it, it's termed as polymetallic nodules, which India has received the sanction from the International Seabed Authority for deep sea mining in the central Indian Ocean. So how to proceed with it, how to overcome the challenges with which the international realm is facing. So all these initiatives are somehow being taken in order to combat these challenges. So one point or one section that you can just delve upon is, what are the initiatives taken. We discussed about the opportunities and challenges, but initiatives taken by the government, not only India, if you're focusing on India, or any other country on world order, that can be taken into consideration. Otherwise, it was a very good presentation, comprehensive, nice. So it was enlightening for all of us, I think. So thank you so much. Thank you, Manish sir, for inviting me. I also I've been mentioning that the dynamic students who are, because I know that these initiatives cannot be become successful unless you have a good team. And I'm sure under the leadership of Manish sir, you all are you have a very good guide. So it's a very good initiative that will give confidence to the students also to come up with with their views. To it's very important to give your insight also. It's very important to talk about it. So it's a platform. It's a platform for the students, and I think this is the first initiative that I have taken. I've seen which has been organized, where the students, I see in numbers, and so many lectures have been taken place. So it's, I must it's a commendable thing that it's a very good initiative. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words, and it's really our pleasure to have you here. आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी जारी रखो। ये ज़रूरी है कि आँखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब जारी रखो।